Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss nutrition of bacteria. So let's move to the classboard. So dear students, nutrition of bacteria. Very important long question. इसको मार्क कर लें. Nutrition of bacteria or classification of bacteria on the basis of nutrition. You can also be asked in that manner. So on the basis of nutrition, there are two major categories of the bacteria. As I told you in the previous lecture, so as far as nutrition is concerned, bacteria can be divided into two major categories. Heterotrophic bacteria and the autotrophic bacteria. So first of all, the basic difference between them, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक. तो आपको पता है स्टूडेंट्स, ऑटोट्रॉफ किन्हें कहते हैं, हेटरोट्रॉफ्स किन्हें कहते हैं. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी खुराक खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड एज द ऑटोट्रॉफ्स, व्हाइल द ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्व्स, रादर दे आर डिपेंडेंट ऑन द ऑटोट्रॉफ्स, दे आर कॉल्ड एज द हेटरोट्रॉफ्स. सो उसी तरह से हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया जो अपनी खुराक यानी कि अपना फूड जो है वो प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे अपनी मदद आपके तहत, दे आर हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, while the bacteria which are capable of forming or synthesizing their food, they are called as autotrophic. So let's come according to their definition. The bacteria that can not synthesize organic compounds by using simple inorganic substances are called
the heterotrophs or heterotrophic bacteria. While the autotrophic bacteria, the category of bacteria or the type of bacteria which can synthesize their food organic compounds जो कि इनके फूड होते हैं by using simple inorganic compounds are called autotrophic bacteria. Clear? So that's the generalized difference between them. Now, the heterotrophic and autotrophic bacteria, they are further subdivided into two categories. So first of all, the heterotrophic bacteria so they are categorized into saprophytic, bacteria, first of all, we will discuss this. The second category is the parasitic bacteria. So saprophytic bacteria, these heterotrophic bacteria are dependent upon humus. They are dependent upon humus. Yes. इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मार्क कर लें. What is humus? So humus is partially decayed plant or animal matter तो डिकेड है तो बहुत सादा सी बात है कि ये डेड है. ठीक है. सो पार्शली डिकेड प्लांट और एनिमल मैटर विच इज प्रेजेंट इन द सॉइल. लेकिन कहां पर मौजूद है ये? विच इज प्रेजेंट इन soil. So the soil is full of these partially decayed animals and plant materials. ठीक है. तो उस partially decayed एनिमल और प्लांट मटेरियल को कहेंगे डेड ऑर्गेनिक और डेड जो प्लांट मटेरियल है या डेड एनिमल्स का जो मटेरियल होता है जो गल सड़ रहा होता है ज़मीन के नीचे मट्टी के अंदर, उसे कहते हैं ह्यूमस. और जो सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया होते हैं ये उसी पर डिपेंडेंट होते हैं. द सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, these bacteria have an extensive
enzyme system which digests the complex humus into simple compounds which is then absorbed, जो बाद में फिर absorb कर लिया जाता है by the bacteria और bacterial cells, जो इनके cells होते हैं, मतलब कॉलोनी में या सिंगल है तो सिंगल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसके एग्जाम्पल्स, its example include ammonifying bacteria, वो जो डिकेइंग प्रोटीन्स हो रही होती हैं उनको कन्वर्ट कर रहे होते हैं इनटू एमोनिया, ठीक है, उसको एमोनिया में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। सो वहाँ से फिर इस तरह से मुख्तलिफ तरह के आइटम्स जो होते हैं उनको कन्वर्ट करने के बाद डिकेड को मज़ीद सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट करने के बाद एज दे हैव वेरी एक्सटेंसिव एंजाइम सिस्टम, तो उसमें से अपनी जो सिंपल कंपाउंड्स को एब्सॉर्ब कर लेते हैं। सो दैट काइंड ऑफ बैक्टीरिया आर कॉल्ड अ सैप्रोफाइटिक। और एक चीज़ बहुत अच्छे से जहन नशीन कर लें, ये सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया ही एक्चुअली दे आर द डीकम्पोजर्स, यही डीकम्पोजर हैं along with fungi। क्लियर? तो सारे बैक्टीरिया डीकम्पोजर नहीं होते, जो सैप्रोफाइटिक ग्रुप है इसमें वही सिर्फ डीकम्पोजर होते हैं, जो कि डेड एनिमल्स और प्लांट्स को डिके करके और वहाँ से फिर अपनी जो एनर्जी है उसको हासिल करते हैं, अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, ठीक है। द सेकंड कैटेगरी ऑफ हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया इज द पैरासिटिक बैक्टीरिया। सो एज फार एज पैरासिटिक बैक्टीरिया आर कंसर्न, तो पैरासाइट्स स्टूडेंट्स आपने पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट है आपका कि पैरासाइट हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं, तो ऑर्गेनिज्म which is dependent for food and shelter upon the living host from which it gets the food and shelter and in return harms them। उनको नुकसान पहुंचाते हैं, वहाँ से खुराक हासिल करते हैं, वहाँ से जगह हासिल करते हैं, रिहाइश हासिल कर लेते हैं, लेकिन बदले में उनको फिर नुकसान भी पहुंचाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम पैरासाइट्स कहते हैं। इसी तरह से ये भी पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। इनमें से कुछ ऐसे जो पैरासाइट्स हैं बैक्टीरिया के अंदर। सो द बैक्टीरिया which lives inside a living host for food and shelter and in return harms the host। क्लियर? तो बदले में उसको क्या पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को हम पैरासिटिक बैक्टीरिया कहते हैं। तो याद रखिएगा, ऑल डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, ऑल डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, जितने भी बीमारी कॉज करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया पैरासाइट्स, दे आर पैरासाइट्स। और आगे चलकर हम पढ़ेंगे, सिर्फ अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो 200 से ज़ायद डिफरेंट बैक्टीरिया नॉमिनेटेड है, जो कि मुख्तलिफ तरह की बीमारियों में, इंसानों के अंदर मुख्तलिफ तरह की बीमारियां कॉज करने में शामिल है। एंड इट इंक्लूड्स फॉर एग्जांपल माइकोबैक्टीरियम,
tuberculi, Clostridium, tetany. It causes tetanus in humans. Mycobacterium tuberculosis, it causes TB or tuberculosis. Like this, there is another one like the streptococcus pneumonia. That causes pneumonia and blood poisoning in humans as well as in the other organisms. So these categories are the parasitic bacteria. Clear? Now, the second category is of the autotrophic, the bacteria which are able to synthesize their own food. So by using the simple inorganic. Simple inorganic का मतलब है जैसे कि आमतौर पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. इनकी मदद से क्या बनवाया जाता है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि शुगर्स बनवाई जाती हैं. सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स. अब इसमें भी दो कैटेगरीज हैं हमारे पास. क्लियर? वी हैव गॉट टू कैटेगरीज इन ऑटोट्रॉफ्स. Number one are the chemosynthetic, bacteria, मतलब हैं तो कीमोसिंथेटिक लेकिन अपनी एनर्जी खुद से बना रहे हैं. सो दिस द बैक्टीरिया which oxidizes inorganic compounds and trap energy for their vital functions are called chemosynthetic bacteria. So these bacteria oxidize ammonia and nitrites and nitrates and the ferrous iron. Yeah. And other
inorganic compounds और भी मुख्तलिफ तरह के कंपाउंड्स हैं जिनको ये ऑक्सीडाइज करवा सकते हैं, लेकिन स्पेशली अमोनिया, नाइट्रेट्स, नाइट्राइड्स एंड फेरस आयरन like that. So these are the inorganic compounds which are used by these bacteria to trap energy. So its examples include, for example, nitrosomonas, which converts ammonia into nitrite, so that is nitrosomonas, and nitrobacter which converts nitrite into nitrate. Okay, so and ferrous iron आपको याद होगा, आपने पढ़े हुए है Fe+2. So हमारे पास फेरिक भी होती है और फेरस भी होती है. So which has got 2 positive valencies, it is ferrous, while 3 positive valencies, it is the ferric. So ये ferrous iron को trap करेगी. Now as far as the other category is concerned, autotrophic bacteria, it includes the photosynthetic, the photosynthetic bacteria. तो नाम से जाहिर है कि ये क्या करते हैं, photosynthesis. Clear? To produce or to perform or to synthesize their energy by using the photosynthetic mechanism. लेकिन डिफरेंस है, ठीक है. द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैव क्लोरोफिल, इनके पास क्लोरोफिल है, उसको बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं. दे हैव क्लोरोफिल व्हिच इज कॉल्ड bacteriochlorophyll, which is different or which is dispersed in the cytoplasm. जबकि प्लांट्स में कहाँ पर होती है क्लोरोफिल? So in the plants, the chlorophyll is present in the plastids, the chloroplast. ठीक है? While in plants, it is present in chloroplast. So chloroplast डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है, आपको चैप्टर नंबर 4 में डिटेल से पढ़ाया था. जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल तो बैक्टीरिया के अंदर होते ही नहीं. इस वजह से जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है उनमें है तो सही क्लोरोफिल, लेकिन वो डिस्पर्स्ड है, वो ऐसे पड़ी हुई है, बिखरी पड़ी है साइटोप्लाज्म के अंदर. क्लियर? नॉट लाइक द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द प्लांट्स, जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद है. नंबर 1. नंबर 2, देयर इज अनदर डिफरेंस. सो द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यूज H2S, ये H2S को इस्तेमाल करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, इंस्टेड ऑफ वाटर. इंस्टेड ऑफ वाटर, तो पानी की जगह किसको इस्तेमाल कर रहा है? H2S को.
तो जब वाटर के साथ फोटोसिंथेसिस होती है तो उसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है, सो दैट इज वाई यहाँ पर H2S इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पर क्या रिलीज होगा, सल्फर। सो सल्फर इज रिलीज्ड instead of oxygen. Instead of oxygen, clear? And the equation becomes H2S plus carbon dioxide. It will form CH2O, means the sugars, organic compounds, plus water plus sulfur is released as a form of gas. और इसी वजह से जहाँ पर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, सल्फर होने की वजह से वहाँ पर फाउल स्मेल होगी, क्लियर? एंड हियर आर फ्यू एग्जांपल्स. Green sulfur bacteria, purple sulfur bacteria, purple non-sulfur bacteria. So these are the few examples of the photosynthetic bacteria. So dear students, hopefully आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.